me in this video the chapter number 2nd of class 7th, and that is fractions. In the last video we have completed question number 10 to 14 of exercise 2a. So now let's see the next question number 15. Question number 15 is of 2 upon 3 fraction and fraction 5 upon 6 which is greater and by how much. मीन्स दोनों फ्रैक्शन में से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है और कितनी बड़ी है सेकेंड से फाइंड करना है. सो सॉल्यूशन इज फर्स्ट फ्रैक्शन एंड नेक्स्ट है सेकेंड फ्रैक्शन. So first fraction is 2 upon 3 and second fraction is 5 upon 9. तो first of all LCM of both denominator 3 and 9 is equal to LCM of both denominator 3 and 9 is equal to 9. Okay, so now let us change each of the both fraction into an equivalent fraction having 9 as its denominator. So first fraction is 2 upon 3. Numerator and denominator both are multiply 3. So 2 into 3 numerator is 6 and denominator 3 into 3 9. And second fraction is 5 upon 9. तो डिनोमिनेटर इज 9. ओके, तो सेम फ्रैक्शन इज 5 upon 9 एंड बोथ डिनोमिनेटर इज सेम. सो बोथ फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, सो एंड नाउ कंपेयर in numerators. तो numerator is first numerator is 6 and second numerator is 5 and first numerator is greater than second numerator. So first fraction is greater than second fraction. Okay, so first fraction is 2 upon 3 is greater than second fraction 5 upon 9. तो फर्स्ट पार्ट इज कंप्लीट एंड सेकंड बाय हाउ मच. तो सेकंड पार्ट इज डिफरेंस ऑफ देयर फ्रैक्शंस. ओके, तो फर्स्ट 6 upon 9 माइनस सेकेंड 5 upon 9 इक्वल टू बोथ डिनोमिनेटर इज सेम. तो डायरेक्टली डिफरेंस ऑफ नोमिनेटर 6 minus 5. सो 6 minus 5 1 upon 9. So first fraction 2 upon 3 is greater than 5 and by how much 1 upon 9 and this is answer. Okay student. So student, next question number 16. Question number 16 is the cost of a pen is ₹16 and 3 upon 5 and that of a pencil is ₹4 and 3 upon 4. Okay, so which cost costs more and by how much.
So student, question number 16 is the cost of a pen is rupees 16 3/5 and that of a pencil is rupees 4 3/4. Which cost is more and by how much? So यहाँ पे इस क्वेश्चन में पेन की कॉस्ट गिवन है एंड पेंसिल की भी कॉस्ट गिवन है। दोनों में से किसकी कॉस्ट ज़्यादा है वो बताना है और कितनी ज़्यादा है वो फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन इज कॉस्ट ऑफ ए पेन इज इक्वल टू, कॉस्ट ऑफ पेन कितनी है रुपये 16 3/5 एंड नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल कितनी है गिवन रुपये 4 3/4। ओके, सो कॉस्ट ऑफ पेन एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल गिवन है। तो पेन की कॉस्ट है 16 रुपये 3/5 एंड पेन की कॉस्ट है 4 रुपये 3/4। सो यहाँ पे डायरेक्ट पता चल रहा है कि पेन की कॉस्ट कितनी है 16 एंड पेंसिल की कॉस्ट कितनी है 4। तो यहाँ पे 16 है, यहाँ 4, तो कौन सा बड़ा है 16, तो 16 रुपये किसका है पेन का। सो सॉल्यूशन हो जाएगा, फर्स्ट सॉल्यूशन इज द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज मोर। ओके, तो फर्स्ट इज कंप्लीट। तो यहाँ पे मोर क्या गया आप लिख सकते हो रुपये 16 3/5 ग्रेटर देन रुपये 4 3/4 एंड नेक्स्ट बाई हाउ मच। सो पेन इज रुपये 16 3/5, तो ये है मिक्स फ्रैक्शन, इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो 16 5 18, 80 + 3 83, सो 83/5 एंड नेक्स्ट को मिक्स फ्रैक्शन को अगेन प्रॉपर में 4 × 4 16, 16 + 3 19, तो 19/4। ओके, एंड नेक्स्ट एंड नाउ वी टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 5 and 4 इक्वल टू 20। So and now let us change each of the fractions an equivalent fraction for having 20 as its denominator. So 83/5 numerator and denominator both are multiply 4 and next 19/4 again numerator and denominator both are multiply 5. Okay, so 83 multiply 4 equal to 332 upon 5 × 4 20 and next given है 19 × 5 95 upon 20. So difference of their fractions equal to 332/20 minus 95/20 and denominator is same, तो directly difference of numerator 332 minus 95, तो 332 minus 95 equal to 237/20। सो 237 को 20 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 11 एंड फ्रैक्शन आ जाएगी 17/20। सो 11 रुपये 17/20, दिस इज आंसर। ओके, तो फर्स्ट आंसर इज द कॉस्ट ऑफ पेन इज मोर एंड मोर इज 11 रुपये 17/20। ओके, एंड दिस इज आंसर।
And student, next exercise 2b, and concept of exercise 2b is multiplication of fractions. So next is multiplication of fractions. So only for one rule. So rule, product of fractions equal to product of their numerators, upon product of their denominators. Okay. So first, only for one rule, product of fraction equal to product of their numerators upon product of denominators, and this is formula of product of fractions. Okay. And first fraction is a upon b multiply second fraction c upon d. So product of their numerators, the numerator is a into c. The product of numerators a into c upon product of denominators, so b into d. Okay, only for one rule and concept of multiplication of fraction. Okay, and next solve the exercise 2b, question number first. So student, question number first of exercise 2b. So question number first is find the products, and first part is 3 upon 5 multiply 7 upon 11. So first fraction is 3 upon 5 and second fraction is 7 upon 11. First fraction a upon b multiply second fraction c upon d. So product of numerators upon product of denominators. Okay. So product of numerators 3 multiply 7 upon product of denominator 5 into 11. 3 into 7 21 upon 5 into 11 55. So 21 upon 55, this is answer. Okay student. Next second part is 5 upon 8 multiply 4 upon 7. So again multiply product of numerators upon product of denominators. The product is product of numerators, numerator 5 and 4. 5 and 4 upon product of denominators 8 and 7. 8 and 7. Okay. 4 1s are 4 and 4 2s are 8. So next 5 into 1 upon 2 into 7. 5 into 1 5, 2 into 7 14, and 5 upon 14, this is answer. Okay student. And next third part, and third part is 4 upon 9 multiply 15 upon 16. Okay. So product of numerators 4 into 15 upon product of denominators 9 into 16. Okay. So 4 1s are 4, 4 4s are 16. Cancel. 9 3s are 9 and 9 3 5s are 15. 3 3s are 9 and 3 5s are 15.
सो ऊपर रिमेनिंग रह जाएगा 1 इंटू 5 अपॉन नीचे रह जाएगा 3 इंटू 4। तो 1 इंटू 5 5, 3 इंटू 4 12 है, तो 5 अपॉन 12 है। दिस इज आंसर। ओके, एंड नेक्स्ट फोर्थ, तो फोर्थ पार्ट इज 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाई 15। सो 2 upon 5 multiply numerator 15 and denominators given है तो denominators is 1, so multiply numerators upon multiply denominators, तो 2 into 15 upon 5 into 1, 5 1 जा 5 and 5 3 जा 15, तो 2 into 3 upon 1 into 1, तो 2 into 3 6, 6 upon 1 equal to 6 and 6, this is answer. Okay student, so next part in the next class में। so आज के लिए इतना ही। okay।